Parliament to enact law for implementing international कौन सा एंट्री है बता दें? Well, entry 3. Entry 3, external affairs, implementation of treaties. For example, आप इसको सुन तो लीजिए ना, ऐसे ना करें ना, थोड़ी सी हमारी भी कदर कर लें। एंट्री 3 को ट्रीटीज की तो मैंने बात ही नहीं आपसे की। आप सुन भी लेना, ट्रीटी की मैंने बात ही नहीं की। मैं तो आपको कह रहा हूँ पाकिस्तान चले ट्रीटी के खिलाफ ही कर रहा है काम। ट्रीटीज में क्यों जोड़ रहे हैं हम? भाई किसी को आउटर स्पेस में प्रोग्राम करना है, इंडिया ने किया, कोई ट्रीटी के जरिए कर रही है। अगर हम कल शुरू करना चाहें तो आपके मुताबिक हम नहीं कर सकते। माय रीडिंग ऑफ द 4th शेड्यूल, आई मीन साइंस इज डेवलपिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ इवॉल्व्ड, उर्दू में इसको शायद मसनूई ज़हानत कह लें, आउटर स्पेस खलाई बसीत कह लें, शायद सोशल मीडिया समाजी राब्ता कह लें। तो इनके मुतालिक पार्लियामान कानून नहीं बना सकती है, क्योंकि इन तीनों चीज़ों में से एक का भी जिक्र फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में भी नहीं है और आइन की किसी शिक में एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली भी नहीं है। अब जब आप अटेंड कर लें मेरे सवाल को। माय लॉर्ड, मेरे ख्याल में बना सकती है। तो आपने अपने ही सवाल को तोड़ दिया फिर अपने जवाब को। नो माय लॉर्ड, मैं आपने जो लेजिस्लेटिव लिस्ट में एंट्रीज हैं उनको टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट, मैंने 3 एग्जांपल दे दी ना, इनको किसी तरह से भी वहां नहीं फिट हो रही हैं और ना आइन की किसी और शिक में आ रही हैं ये बातें जो मैंने आपसे जिक्र की हैं। तो फिर पार्लियामान के पास तो इख्तियार नहीं है ना, पाकिस्तान स्पेस प्रोग्राम नहीं शुरू कर सकेगा क्योंकि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में इसका तस्करा नहीं है। या तो आप ये आर्ग्यूमेंट करेंगे कि नहीं सिंध कर सकता है, वफाक नहीं कर सकता है, क्योंकि बाकी सारे इख्तियारात फिर सूबों के पास हैं। ये तो आप जवाब दे देना। मैं दे देता हूँ। ऐसे ब्रॉड आप अगर पेंट ब्रश स्ट्रोक्स लगाएंगे तो उसके लिए अपनी मुश्किलात भी खड़ी हो जाती हैं। Let me explain. For example, with respect to space programs, if Pakistan has entered international treaties, कानून की बात कर रहे हैं, कानून then there are specific entries which allow Parliament to enact law for implementing international treaties. कौन सा एंट्री है बता दें? Well, entry 3. Entry 3, external affairs, implementation of treaties. For example, आप इसको सुन तो लीजिए ना, ऐसे ना करें ना, थोड़ी सी हमारी भी कदर कर लें। एंट्री 3 को ट्रीटीज की तो मैंने बात ही नहीं आपसे की। आप सुन भी लेना, ट्रीटी की मैंने बात ही नहीं की। मैं तो आपको कह रहा हूँ पाकिस्तान चले ट्रीटी के खिलाफ ही कर रहा है काम। ट्रीटीज में क्यों जोड़ रहे हैं हम? भाई किसी को आउटर स्पेस में प्रोग्राम करना है, इंडिया ने किया, कोई ट्रीटी के जरिए कर रही है। अगर हम कल शुरू करना चाहें तो आपके मुताबिक हम नहीं कर सकते हैं, या कर सकते हैं तो अगर कर सकते हैं तो वो कौन सा पावर पार्लियामान इस्तेमाल करेगा? माय लॉर्ड, लेजिस्लेटिव एंट्रीज में बहुत सी बता देना मुझे एक। फॉर एग्जांपल माय लॉर्ड, जैसे ये अगर इसमें ये न्यूक्लियर एनर्जी का की बात आया, उसके अंदर माय लॉर्ड आपने मकल्लफ वर्सेस मेरीलैंड का केस आपने आप लोग इतने मुतासिर हो गए हैं अमेरिकन, हम आपसे हमारा रिटन आइन है उसकी हम बात कर रहे हैं, उनका आइन अपनी जगह है। मैं आपकी जजमेंट जो कि आपने भाई अब जजमेंट को छोड़ दीजिए ना, सिविल एविएशन अथॉरिटी के केस में दी, उसमें आपने आप जरा तसल्ली से बहस करें ना। बिल्कुल, या तो आप ये आर्गुमेंट पेश ना करें। जब आप ये पेश करते हैं ये बहस सामने या एक मफरूजा करते हैं कि इट इज एज गिवन, तो मैं ये नहीं मानता हूँ। या तो क्या मैं ये वापस लेता हूँ ये बात को। आप कहते हैं कि पार्लियामान सिर्फ वो काम कर सकती है जो 142 फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट या एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली हो, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। या तो कहीं मैं इस बात को वापस लेता हूँ। अगर आप इस बात खड़े हुए हैं तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप जवाब नहीं देते हैं, आप कहते हैं मैरीलैंड वर्सेस उसमें देख लें, उसको कम क्यों देखें? माय लॉर्ड, मैं स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में तो केस तैयार करके नहीं आया। नहीं जी, मैं तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पे हूं, उस पे मैं सवाल उस पे बात करें ना। फिर आप ये ब्रॉड स्ट्रोक्स ना पेंट कीजिए। स्टार्टिंग पॉइंट तो मैं आपसे कहीं से आप ब्रॉड स्ट्रोक्स जब पेंट करते हैं अपने लिए मसले खड़े कर देते हैं, तो आप फोकस्ड रहें इसी बात पे। मैं तो 142 जी लर्नड काउंसिल यहां लर्नड काउंसिल की एंट्री भी है। आप आइटम 58 देखेंगे जी, आइटम 58 और दूसरा मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा, नॉटविथस्टैंडिंग आर्टिकल 191, आपका आर्ग्यूमेंट ये है
that the Parliament is bereft of jurisdiction to legislate in the context of any of the fundamental rights or access to justice. My lord, I have not articulated my argument as yet. अगर आप ये मैं तो अगर आप सिर्फ कर लें, I setup think कर रहा था। बेहतर होगा अगर आप पहले पहले आप you अपना argue as you argument want. कर लें। Argue as you want. Please go back to If your. your lordship, I apologize. You argue as you your want. lordship चलें. should not apologize. चलिए I चलिए have- करिए My lord, for 2 days I have heard all our करिए questions. करिए Let me address करिए those questions. करिए Is what I'm saying. My lord, I will answer your lordship's question also. अब आप Let कर me लीजिए ना, formulate. हाँ। My lord, the starting for legislative competence is entry Article 142 or the body of the Constitution. Now, body of the Constitution for our present purposes, the only article relevant is Article 191. In the legislative list, there is entry 55. Now, these are the two provisions that have to be interpreted and read. As I read, Article 175(2), the expression subject to law, which is used in 191, is used in various other articles also. That by itself does not confer any legislative power or on any identified legislature. Just kindly look at Article 14. Article 14. 1-4. Man. Dignity of man. Article 14. It says, the dignity of man and subject to law, the privacy of whom shall be inviolable. The law, the province will make the law or the federation will make the law. In order to determine who can make the law for the purposes of Article 14, you have to go to other provisions of the Constitution. The same is with respect my submission for Article 191 also. It does. ये आर्ग्यूमेंट आप पूरा तो कर लें तो प्राइवेसी के मुतालिक कौन बना सकता है कानून? मतलब फेडरेशन भी बना सकती है और प्रोविंस भी बना सकता है, दोनों बना सकते हैं। उनके लिए आपको देखना पड़ेगा कि लेजिस्लेटिव पावर स्प्रेड कैसे है, और दोनों ने बनाए हुए हैं, क्योंकि क्रिमिनल लॉ, पीनल लॉ पे हो सकता है गलत बनाए हों, प्रोविंस भी बना सकता है, और प्राइवेसी वगैरह के बारे में फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है, फेडरेशन ने भी बनाया हुआ है। नहीं, पर उसी तरह अगर चलें तो 191 में सब्जेक्ट टू लॉ है, एंड सपोज देयर इज नो, एंड आई थिंक देयर इजंट एनी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री रिलेटिंग टू प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, There is no. so then the word law would become redundant in 191. No, my lord. How, No, what would happen to that? That's exactly what I'm saying. I'm trying to proceed step by step. So 191, I read it, my lord, but the mere fact that the expression subject to law is used does not confer any legislative power, just as that it doesn't confer any legislative power under Article 14. What it is, my lord, the power is conferred on the Supreme Court. The power is on the Supreme Court to make rules. Subject to law is a limitation on that. It's a limitation on the power that has been granted to the Supreme Court. My lord, there are two Supreme Court judgments which say that, my lord, your lordship, I've mentioned them in my, in my written submission. Mr. Bhandari, do you mean that judgment cite kar dein? The first, The citation. Mr. Bhandari, do you mean that before making rules there must be some law? my lord, I'm not saying that. There may be, So subject to law, what does it mean, subject to law? well, and a validly enacted law by the appropriate legislature. It could be pre-existing, it could Without any enactment, rule cannot be made. no, rules can be made. They can But be, subject to law. my lord, the rule-making power is a standalone independent power on the Supreme Court. But subject to law. If there is a law, then the Parliament can make that law within the limits that I will just explain. You said Parliament can make a law. Parliament can, but I will just explain what in my humble